नमस्कार। बॉलीवुड की कुछ एक्ट्रेसेस हैं जो फिल्मों में एक्टिंग की वजह से कम, सियासी बयानबाजी की वजह से ज्यादा सुर्खियों में रहती हैं। फिर वो चाहे पायल रोहतगी हो, कंगना रनौत हो या फिर स्वरा भास्कर। सियासी बयानबाजियों की वजह से ही कंगना रनौत को जहां मोदी समर्थक माना जाता है, तो वहीं स्वरा भास्कर जैसी एक्ट्रेस को मोदी विरोधी। यही वजह है कि पीएम मोदी की कट्टर सियासी विरोधी मानी जाने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब मुंबई पहुंची तो स्वरा भास्कर का तो जैसे दिल का दर्द ही फूट पड़ा। उन्होंने हाथ में माइक थामते ही मुनव्वर फारूकी से लेकर ना जाने क्या क्या नाम गिनवा दिए, जिनके कॉमेडी शोज को पिछले कुछ दिनों में रद्द किया गया। आप भी देखिए स्वरा भास्कर किस तरह से सीएम ममता बनर्जी से शिकायत कर रही हैं। It is all our burden, and I assure you, ma'am, that everyone in this room is doing their bit. There are many older, illustrious people who've spent their lives on this, but allow me to take a minute to introduce you to some of the younger people who have risked their careers and their employment and very livelihood to keep resistance in their own small way alive. Munawwar Farooqi is here. He has spent 1 month in jail. Stand up. So he spent a month in jail for a joke he didn't tell. But Raj is here. He runs a performance space that has been vandalized continuously for hosting people like Munawwar, like Aditi Mittal, like Agrima Joshua, who was attacked. Rita Chadha is here. Kubra Seth is here. Arpita, Ashwini sir, Avinash ji. All of these people are working in the film industry, facing a lot of resistance to tell stories where what is happening in India will find a place. Fahad is an activist who has multiple FIRs on him. We are in a situation today, and I'm sorry I'm repeating what we all know, but it's a lived experience. We are in a situation today where for a common citizen like me, we either on one side, what are our options? What are we experiencing? On one side, there is the mob, completely unaccountable because the ruling dispensation has found a way to use the mob to its liking, and the police and the state seem to be completely okay with allowing that. On the other side, you have the state that uses arbitrary power and is distributing UAPA and sedition charges like it is prasad of a god we don't want to pray to but are forced to bow down to. This is our reality. I'm sorry I'm a little emotional. People ask why there is no Meryl Streep in India. There is no Meryl Streep in India because Meryl Streep could stand in front of the president-elect of her country and critique him in the harshest way and not a hair on her head was harmed. We are all unemployable today. स्वरा भास्कर के ही एक सवाल पर सीएम ममता बनर्जी ने बॉलीवुड इंडस्ट्रीज को भरोसा दिलाया कि टीएमसी के सत्ता में आने पर यूएपीए कानून खत्म कर दिया जाएगा। यानी ममता बनर्जी की पार्टी की जब सरकार आएगी तो वो मोदी सरकार की ओर से लाए गए यूएपीए कानून को खत्म कर देंगी। अब देखना यह है कि विपक्ष का चेहरा बनने को आतुर ममता बनर्जी स्वरा भास्कर से किया ये वादा कब तक पूरा कर पाती है।